Hello and warm welcome to all of you watching this video. My name is Nikhil from Pratham Test Prep. This video is for those students who wants to get into the industry of hotel management or hospitality management. The form name is NCHM JEE Application Form 2022. Yes guys, जो भी students hotel industry में enter करना चाहता है, there are a lot of students in India जिनके लिए NCHM जो है that is their first priority. Why? आपने IHM का नाम सुना होगा. सो जितने भी IHM है मेजॉरिटी ऑफ IHM इन इंडिया, सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर कवर्ड इन NCHM JEE एप्लीकेशन फॉर्म. अगर आपको उसके अंदर एंटर करना है तो आपको ये एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा. ऑलराइट, सो विल टेक यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म. उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको कैसे फिल करना है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है, एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टफ्स अबाउट NCHM JEE. इसके लिए आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइज, अगर आपने अभी तक कोई भी फॉर्म्स नहीं फिल किए हैं, वी कैन हेल्प यू. हमारे फॉर्म दिस एन ऑप्शन कॉल्ड फॉर्म्स अपडेट इन योर PSIS अकाउंट. फॉर्म्स अपडेट में जितने भी फॉर्म्स निकल चुके होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम प्रथम अकाउंट में देते हैं. यूजिंग द PPTs and videos uploaded in the Pratham account, you guys can refer to them and you can fill up those forms. Those students who are not a part of Pratham Test Prep, आप हमारे YouTube चैनल पर इन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं प्रथम टेस्ट प्रेप पर. वहाँ पर आपको ये हमारी फॉर्म फिलिंग वीडियोस मिल जाएंगी. इसके अलावा भी कुछ और वीडियोस हम लोग रन करते रहते हैं रेगुलरली इन आवर यूट्यूब चैनल, विच इज़ like we people do some regular vocabulary sessions. We people do some current affairs sessions regularly. Also, those students who want to get into the industry of law, उनके लिए भी हम लीगल करंट अफेयर्स के क्लासेस रन करते रहते हैं रेगुलरली बेसिस पर. सो अगर आपने अभी कहीं नहीं ज्वाइन किया है, और इफ़ यू हैव जॉइंड समवेयर एल्स, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग वेयर यू एक्चुअली वांट टू गो. आप अपने एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, दीज आर द कॉमन थिंग्स विच एक्चुअली कम्स इन द एंट्रेंस टेस्ट. सो आप सब्सक्राइब कीजिए, सी दोस वीडियोज एंड टेक अर हेल्प इन एक्चुअली गेटिंग गुड एक्सपोजर टुवर्ड्स द एंट्रेंस टेस्ट. ओके, जिनको एक्चुअली प्रथम ज्वाइन करना है, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन देयर फोन नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. आप हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल हेल्प यू इन काउंसलिंग एंड विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग yourself for the entrance test. All right, so I'll take you through the process of filling up the form. Before that, let's just talk about NCHM exam. Okay, so the courses offered is BSc course in hospitality and hotel administration, BSc HHA इसको कहा जाता है. And if I talk about the eligibility criteria, आपके पास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, इवन इफ इट इज़ कोर, इलेक्टिव और फंक्शनल सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है इन 12th. ऑलराइट, सो इसमें एक एज लिमिट का भी ऑप्शन है. मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 25 ईयर्स ओल्ड. आप मैक्सिमम 25 ईयर्स ओल्ड तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं. फॉर द जनरल एंड OBC कैटेगरी, स्टूडेंट्स फ्रॉम SC ST एंड PWD कैटेगरी, the upper limit is 28 years. So 28 years तक आप अप्लाई कर सकते हैं if you are from these categories. Last important point, physical fitness. अगर आपका जब भी आपका सिलेक्शन होता है, there's a physical fitness certificate given by the medical practitioner. So वो आपको present करना होता है जब भी आप actually इसके सिलेक्शन के लिए जाते हैं. So when you actually get selection in the college or IHM, you will have to get present this particular certificate. All right, selection process में you will be having that entrance test based on the merit. You will be getting all the marks you will get on that basis. That on that basis you will be getting the final selection in the NCHM JEE in the IHMs. All right. Talking about other things, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गई थी 4th February 2022 को. लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म इज 3rd May 2022. टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बट एज आई हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू गाइज कि आप जब भी फॉर्म रिलीज होता है आप उनको जल्दी से फिल किया कीजिए, बिकॉज एक साल आप पाइल अप करके रखेंगे तो इट माइट बी अ प्रॉब्लम फर्दर. ओके, सो यू हैव दैट फॉर्म विद यू, यू हैव द वीडियोस, गो अहेड एंड फिल दिस फॉर्म्स. ऑलराइट, एग्जाम डेट उन्होंने दिया है 28th May 2022 एंड CBT इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. दैट मीन्स दिस टेस्ट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नॉट अ पेन एंड पेपर. ऑलराइट, एप्लीकेशन फीस इज 1000 रुपीज़ फॉर द जनरल एंड OBC कैटेगरी. EWS कैटेगरी के लिए 700 रुपीज़ एंड SC ST PWD कैटेगरी के लिए 450 rupees will be the charges for the application. Okay, now let me click on the form link given here. Once I click on form link, it will take me to
this particular page. This is the main registration page for NCHM JEE 2022. I will click on new registration and I will get this particular page. Now here are a few terms and conditions, जो कि terms and conditions पूरे का पूरा लिख रखा होता है कि आपको कुछ ऑलरेडी ऑप्शन दिए होते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी अरेंज करके रखनी है एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्म. सो दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस. जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो प्लीज़ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को देखिए एंड देन यू कैन गो एंड फिल अप दैट फॉर्म. समटाइम्स कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर मैंशनड होते हैं एंड इफ यू डोंट हैव दैट आप उसको फॉर्म को आपको आधे में रोकना पड़ेगा. सो डोंट गेट इनटू दैट सिचुएशन. Read these important updates and then you go ahead and actually fill up that form. All right, so these are the basic things. You will have to click on this checkbox and you will click here to proceed. Once you do that, it is the main registration page. Now if you guys can see, the main registration page is divided into 4 sections: registration, application, document and fees. So on this particular section you have to mention the candidate name, father name, mother name. You will have to mention the date of birth, gender, type of identification and identification number. This is important guys. आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए. टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. अगर आप इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड उसका रिलेटेड number जो होगा. Supposingly I am mentioning passport there, so I will have to mention the passport number on the below section. All right, this part is done. Next we'll be going for the present address. I will have to give my whole address with country, state, district, pin code number and the contact number. All right, once I do that, it will take me to this particular option. If I have the same permanent address, I will click on this checkbox. If I don't have, I will have to mention the separate permanent address which I have with the same information: country, state, pin code number and district. All right, now below that I will have to choose the password for my password. Password is very important guys. Password जब भी आप create करते हैं इस particular section में you will be needing a alphabet. It will be needing a special character, it will be needing a number, and there are a few more special characters also required to create a password for this. So if in case you guys face problem in actually creating the password, the best way to do it is to keep your name at the rate 123. Okay, and it is easy to remember that also. So अगर आपने already कोई form fill भी किए हुए हैं तो I would recommend कि आपने जो already form fill किए हैं उसके passwords जो रखे हुए हैं, you can use the same password for this as well. जो फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं दे कैन कीप दिस वेज, तो आई थिंक ईजी होगा उसको थोड़ा सा रिमेंबर करना एंड उसके तरीके से हम लोग इसको पासवर्ड बना सकते हैं. नेक्स्ट लेट्स जस्ट गो अहेड. सिक्योरिटी क्वेश्चन, आई हैव टू मेंशन दैट कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं. आई हैव टू mention the answer there. There's a security pin. This particular security pin I will have to punch in this security pin on the above section and I will click on submit. Once I click on submit, this is the next page I will be getting and this is important guys. जब भी आप NCHM का फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लास्ट साइड पर एक ऑप्शन आता है जिसमें आपके पास ये सारे के सारे चेक बॉक्स होते हैं wherein it ask you to verify कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने करेक्टली फिल इन किया है. सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी चेक्ड द नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन दैट करेक्टली, क्लिक ऑन ऑल दीज checkbox and click on I agree and click on final submit. Once you do that, it will take you to this particular page. Now if you guys can see this particular page, a registration form is completed. You will go for application form, this particular part. So complete application form पे अगर आप click करेंगे, it will take you to this particular page. All right, so till this particular part it is already filled. I don't have to fill it because I've already given this information earlier. I will click on the lower side, this from nationality onwards till the last one. All right, so nationality I have to choose state of residence, category from which category you're from, general, SC, ST, OBC, जो भी category है आप उसको mention कीजिए. Person with disabilities, कश्मीरी माइग्रेंट. गाइस अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में अगर आप कर रहे हैं सो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने सर्टिफिकेट साथ में रखिए बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू एनी ऑफ द कैटेगरी यू शुड हैव द सर्टिफिकेट फॉर दैट. आपको अटैचमेंट करना होगा उसका. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट गो अहेड. प्लेस ऑफ क्लास 12 आपको यहाँ पर वो मेंशन करना होगा. वेदर इंग्लिश इज योर कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 12th, येस और नो, यू हैव टू मेंशन येस.
टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट, गवर्नमेंट कौन सा है, आपको वो चीज़ मेंशन करना होगा. ऑलराइट, let's just move ahead and move to the next window. Now it is important, in this particular section I will have to choose the city and state where I actually want to give the entrance test. Okay, this is very very important guys. आप अगर किसी पर्टिकुलर सिटी में स्टे कर रहे हैं, मे बी इन इंदौर, सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने इंदौर वाली सिटी में, इंदौर के अंदर ही आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दीजिए. थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस मत रखिए. तो जो भी आपके नियर बाय सिटीज़ हैं या स्टेट हैं, उन्हीं को ही आप कीजिए. सो सपोजिंगली आई एम फ्रॉम दिल्ली रीजन. ओके, सो मैं फर्स्ट चॉइस में स्टेट में दिल्ली चूज करूंगा एंड राइट हैंड साइड में आई विल हैव टू चूज द सिटी. सो स्टेट भी दिल्ली रहेगा एंड सिटी भी दिल्ली रहेगा, न्यू दिल्ली रहेगा. दैट आई कैन कीप. Second, I can keep, supposingly I want to, the second priority I want to give, that is Gurgaon, so that I can keep Haryana, and on the city I can choose Gurgaon. On the right hand side, on the left hand side, again I can choose Faridabad option, which is a part of Haryana. I can click on Haryana and I can click on Faridabad here. Last option, if Noida is nearby to my place, I can probably mention Uttar Pradesh here, and I can choose Noida on the right hand side. So depending upon your geographical location, you will punch in this information, this thing. Okay, आप please अपने एरिया, आपके लोकेशन के नियर बाय प्लेसेस को ही प्लीज आप चूज कीजिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now let's just go ahead and fill in the academic information. 10th स्टेटस आपको लिखना है, पास्ड और कंप्लीटेड. ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड स्कूल और बोर्ड यूनिवर्सिटी. आपको ये चारों चीज़ें मेंशन करनी है. बिलो दैट रिजल्ट मोड आपका क्या था, विल हैव टू मेंशन दैट एज वेल. ओके, सो बिलो दैट आपको 12th की इंफॉर्मेशन भी पंचिंग करनी है, स्टेटस पास और past or appearing. If you are actually appearing for the entrance test in 2022 and if you are not completed your 12th, you will click on appearing here. Okay, and year of passing will be 2022. Again, name of the examination and the boards, you have to select there. Result mode again, so 10th and 12th की आपको almost same information आपको punch in करनी होगी. Alright, let's just go ahead and move to the next window. So this is the parent information guys. These informations are not mandatory, but since they have given you the information, it's recommended कि आप उसको please fill कीजिए. Father qualification, occupation, annual income. Mother's qualification, occupation, annual income. So this is something you have to fill. आप इस पार्ट को पर्टिकुलर पार्ट को फिल कीजिए. गार्डियंस तो बिल्कुल अगर आपने फादर मदर कर दिया तो आप गार्डियंस को खाली भी छोड़ सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्सरी कि फादर मदर इन्फॉर्मेशन के बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, सो देन वी हैव द सिक्योरिटी पिन. जैसे कि हर पेज के लास्ट में सिक्योरिटी पिन ऑप्शन आ रहा है, यू विल हैव टू पंच इन द सेम सिक्योरिटी पिन हियर एंड क्लिक ऑन सबमिट. वंस यू डू दैट, इट विल अगेन गिव यू दीज ऑप्शंस कि आपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल इन किया है आपको उस पर टिक करना होगा. सो माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, एग्जामिनेशन सिटी एंड एजुकेशन डिटेल्स. सो इस पर आपको सब टिक करना है. इफ़ यू आर टिकिंग ऑन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं एंड दिस नो करेक्शन रिक्वायर्ड इन दैट. ओके, सो जब आप ये चीज़ें पे आप टिक कर लेंगे तो यू विल हैव एन आई एग्री ऑप्शन वेयर यू हैव द डिक्लेरेशन. यू विल क्लिक ऑन आई एग्री and click on final submit. Once you click on final submit, we have completed two parts. Two parts are left. One is document uploads and the application fees payment. So I will click on upload image. Once I do that, the photograph and the signature I will have to attach. The size of the photograph is 10 KB to 200 KB JPG format, and signature can be from 4 KB to 30 KB, again JPG format. It is not difficult to attach the photograph now guys, because a lot of softwares inside the laptop, like in Windows के अंदर there are two options. आप पेंट को ऑप्शन को यूज़ करके भी आप उस फोटोग्राफ को श्रिंक कर सकते हैं, एंड दिस एन ऑप्शन कॉल्ड Microsoft Office viewer. Using that also you can edit the photograph and you can shrink the size of the photograph. अगर आप Apple user हैं, maybe laptop, अगर आपके पास Mac laptop है, so you can go to the online option. You can mention their compress image. You'll get number of options there जिसकी through आप photograph को easily compress कर सकते हैं. Alright, so you'll have to attach the passport and signature and click on this option. Now you will get this particular thing. For a dummy we have attached the photograph and the signature. This is important guys. ये right hand side पे you have a self verified option and self verified. That means it's a kind of self attesting. Okay, so आपको photograph पे भी self attest करना होगा by ticking on this option and
सिग्नेचर पे भी आपको टिक करना होगा. Then only it will take you to the next window, otherwise you won't be going further. All right. So as we have already seen that, we'll have to check in this particular security pin. I will have to click on I have uploaded the documents. I will click on upload. Once I do that, the third part is done, only the payment part is left incomplete. I will click on pay examination fees to 1000 rupees. Now, since I've already mentioned the general category there, the fees was 1000 rupees. I will click on online payment. I will click on proceed for payment, and this particular page I'll get, and I will have to choose the payment gateway, bill desk and Paytm. So even if you choose Paytm, you have the option for debit card, credit card, and banking other options. Okay, so choose any of them. There's no problem in that, and then it will take you to this particular page. So almost all the possible payment options are available: credit card, debit card, net banking. So using these, you can click. Using these, you can make the payment for the application fees. That's it. Once you do that, it will send you the username name and the password for the NCHM CT. आप उसको प्लीज़ सेव करके रखिए प्लीज़ समवेयर. एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है एंड द एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा उनकी तरफ से, एंड उसको प्लीज़ सेव करके रखिए. इफ़ इन केस वो खो जाता तो दैट यू माइट फेस प्रॉब्लम इन दैट. Okay, so this is how we actually fill up the form. Is if in case you guys face any kind of problem, on the left hand side we have given a phone numbers. You can contact us from 10 to 7, and we'll definitely gonna help you in filling up the form, or any kind of assistance is required. All right. So soon we'll be catching in the next video. We'll be creating the video for the upcoming forms like I'm Indore, I'm Rohtak is yet to release the application form. DUJAT is yet to come, and there are a few more universities yet to release their application form. I'll be creating the video for that too. Please do share, like and subscribe our channel. बहुत सारे students हैं जो कि कहीं जिन्होंने कहीं पर भी ज्वाइन नहीं किया है. एटलीस्ट आप ये वाले वीडियोस को अगर आप शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एटलीस्ट वो फॉर्म तो एटलीस्ट फिल कर पाएंगे. तो प्लीज शेयर दिस वीडियो to help them someone. All right. So catch you in the next video. Work hard for your board examination. Work hard for your entrance test too, and stay safe. Thank you and have a nice day, people.